Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav, and here we have with another episode of Daily News Analysis. So I welcome each and everyone here for the official YouTube channel of Pratham Test Prep, and I hope that you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. Make sure that if you're new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all the YouTube session. So I hope that you guys are doing well. Or newspaper, as I told you in each and every session, why it is important to discuss the newspaper, because newspaper will tells you about the information that what is required, what is important in your exam, right? So this is very important to understand the importance of newspaper, right? And what exactly we discuss in the newspaper, we discuss about national news, we discuss about international news, we discuss about economy based news, sports based news, science and tech, personal news, summits and conference, miscellaneous. And apart from that, we also discuss about any Supreme Court verdict, any that is important for especially for the students who are preparing for law entrance exam. So, and we'll ask you the 5 questions that is very important, that is a mix of static and dynamic questions. So questions of the day that will help you out, that this is one is the newspaper, and the questions that you need to solve, and it will tells you about कि like वो अगर आपने कंटेंट को अच्छे से रीड किया हुआ है तो यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है जी, चलो. And quick tips क्या है my friend? Quick tips is something like we discuss about, like with the help of mnemonics we need to learn lots of topic, that is known to be a quick tips. And the very first, Cyclone Remal makes landfall, 1 lakh evacuated in Bengal. The severe cyclone storm Remal started its landfall process between Sagar Island in West Bengal and Kanpura in Bangladesh. What is the process and procedure for the cyclone? And that is we discuss in the deep dive session today, that is 3 p.m. So this cyclone is from the landfall between Sagar Island, that is in the West Bengal. That is a Sagar Island in West Bengal, and the Khepupara in Bangladesh around 9:50 p.m. So it intensified and moved northward by 11:30 p.m. on the eye of cyclone touched the land. So the prevent loss of life, West Bengal administration had evacuated people from low-lying and coastal areas. So obvious that, as we know, it's a natural disaster. So storm has resulted in disruption in air, rail and road transportation in Kolkata and other parts of South Bengal. So that issuing a red alert, the cyclone warning for the state coastline. And यहाँ पे भी एक मीटिंग रखी थी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, and that chaired a meeting to review response and preparedness for the cyclone storm. Chief Minister कौन है बंगाल की? ममता बनर्जी, that urged people to remain indoors. साइक्लोन की क्या क्या प्रोसेस होती हैं that you should know. और वो हम 3 PM पे आज डीप डाइव सेशन है प्रथम टेस्ट प्रेप की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे. Next one, recently few days back you heard in the news कि हांगकांग एंड सिंगापुर में वहाँ पे कुछ स्पाइस के अपने जो इंडियन प्रोडक्ट के हैं उनको एवरेस्ट ग्रुप में और बाकी ग्रुप जो थे मसालों के असली मसाले सच DH इस टाइप के मसालों के ऊपर टेस्टिंग हुई. एंड हांगकांग और सिंगापुर ने दे फाउंड कि इसमें जो केमिकल्स हैं दैट इज़ टू हार्मफुल. सो उसमें जो स्टरलाइजिंग एजेंट है एथलाइन, सो एथिलीन और बाकी प्रोडक्ट्स से बने. तो लास्ट मंथ हांगकांग एंड सिंगापुर रिकॉल सर्टेन स्पाइस मिक्स प्रोडक्ट of MDH and Everest group that allegedly over the presence of higher than prescribed level of sterilizing agent, that is ethylene oxide, इसे हम ETO भी कहते हैं, that is ethylene oxide, which is ETO. So Indian authority have now initiated several measures to ensure that Indian spices comply with food safety standards of the importing countries. Where does contamination occur?
Ganesham Vardhamian, promoter of live spice, says that India does not use ETO as a pesticide but only as a sterilizing agent, that to reduce microbial load in finished goods. बहुत सारे जो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग स्पाइस आर हीप्ड इन मंडीज, जिसे ऑक्शन यार्ड कहते हैं फॉर फार्मर्स, एंड where they are contaminated by human, bird, reptile, and insect contact. Many of the large factories receive material from the mandi, which is fed on automated lines. So it leaves them with high microbial levels and forces them to opt ETU sterilization. However, जो contamination है level that can be reduced early through the process adopted for value addition. Consumers should start looking at the quality of products and not just the price. तो यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का, वो ये शो करता है कि इंडिया एंजॉय सिग्निफिकेंट शेयर इन द ग्लोबल मार्केट फॉर स्पाइस एंड स्पाइस प्रोडक्ट 2023-2024 में 2023 and 2024 में India exported spice worth $4.4 billion, that nearly 14 lakh tons, which is around 12.3% higher than the financial year 2022-23. So in terms of production, garlic, ginger and chili, that were the top 3 spice production in financial year 2023. ठीक है, जैसे जिसमें मेजरली हम 3 चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं अगर अब यहाँ पे स्पाइस प्रोड्यूस करते हैं. पहला है गार्लिक, जिंजर एंड चिली. चाइना, बांग्लादेश, वेस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज़ में एंड यूएस आर द इम्पॉर्टेंट मार्केट्स फॉर द इंडियन स्पाइस, जहाँ हम स्पाइस प्रोडक्ट को सेल करते हैं. सो व्हाट हैज़ बीन इम्पैक्ट ऑन द रिकॉल. So India share the total spice production globally is about 70%. You can think जो almost 1/3, इसको थोड़े मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम में अगर आप इसको लिंक कर पाएँ तो यू अंडरस्टूड कि द ब्रिटिशर्स केम टू आवर कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. और ट्रेड किस चीज़ का? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे इंडिया में आई थी, द पर्पस ऑफ ट्रेड. नॉट ओनली ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वंस दे अराइव्ड इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. सो इंडिया एट प्रेजेंट जो स्टेटस है वो ये है कि इंडिया शेयर्स टोटल स्पाइस प्रोडक्शन ग्लोबली इज अबाउट 70% स्पाइस प्रोडक्शन हम करते हैं पूरे वर्ल्ड का, मतलब 1/3 पॉपुलेशन अलोन इंडिया करती है. सो कंट्रीज हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर ETO एंड मैक्सिमम जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू लेवल होते हैं MRL. सो इथाइलिन ऑक्साइड जो है, जिसके वजह से ये पेस्टिसाइड्स की वजह से इसमें जो यूरोपियन यूनियंस थे, यूरोपियन यूनियन हैज़ stringent norms both ETO and MRL norms. So Japan largely source only organic product. So the industry has been talking to the Indian government demanding discussions with the EU to relax the norms in order to boost Indian spice exports in the EU market. सो यहाँ पे तेलंगाना के कुछ नए जो फार्मर्स अफेक्ट हुए फॉर द इंडियन फूड एक्सपोर्ट हैव सेवरल चैलेंजेस इन द पास्ट टू बिकॉज ऑफ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स इन द बाइंग कंट्रीज. सो यहाँ पे व्हाट हैज़ द स्पाइस बोर्ड डन. Hong Kong and Singapore, the Spice Board issued detailed protocol for all manufacturing exporters to prevent ETO contamination. ETO मैंने आपको बता दिया, इथाइलिन ऑक्साइड की बात हो रही है इसमें. So basically the Spice Board also said it was starting mandatory testing of a spice consignment to Singapore and Hong Kong to ETO. So अभी तो प्रेजेंट स्टेटस ये है, इंडिया का प्रोडक्शन 70% है पूरे वर्ल्ड में. चाइना, बांग्लादेश, वेस्ट एशियन कंट्री को हम स्पाइस और यूएस को स्पाइस देते हैं. ठीक है, मेनली जो प्रोडक्शन है इंडिया का वो है गार्लिक, जिंजर एंड चिली. और टू डू लिस्ट फॉर इन्फ्लेशन बेसिकली इस यहाँ पे RBI के बारे में है. जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स हैं इंडिया में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको यूपीए गवर्नमेंट में क्या सिनारियो थे, इसमें हम क्या क्या चीज़ें जो कंपोजिशन है एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स का. सो अगर आप देखें इस एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स में तो यहाँ पे जो टोटल एग्री इंपोर्ट्स हम करते हैं, यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल सबसे ज़्यादा इंडिया मंगवाता है. तो वेजिटेबल ऑयल जो अराउंड 45% प्रोडक्शन है. जो हमारे पल्सेस हैं उसका हम अपने कंट्री में जो इंपोर्ट करते हैं वो 11% है. F&B जो है वो 8% है, शुगर्स 8% है, स्पाइसेस 4% है. सो मेनली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट नीड्स टू बी द broadly managing all these things. So trade policy, especially imports liberalization, that has to be well
integrated with MSP. MSP क्या होता है my friend? Minimum support price to regulate price and that to help farmers. So what could be the rational trade policy that dovetails well with the domestic MSP policy? First, instead of sudden drop to the zero import duty, that could be have been more calibrated. Second ये है कि it must be ensured that the जो landed price है below the MSP of the major pulses. Third जो domestic prices है MSP और NAFED का, that should undertake uh, large scale procurement at MSP. So basically इसमें MSP and बाकी चीज़ों के issues के बारे में discussion हुई है. Next we move to the next article, astronomical transient burning bright in the blink of an eye. Just a second. So basically this article talking about astronomical transient that burning bright in the blink of an eye. So astronomy, a transient in any celestial object whose brightness changes in short span of time, that is known to be a transient. So बहुत type के astronomical transients होते हैं, all of them united by the phenomena that are violent in some measures. Astronomers study transient to understand where their violence comes from and what that can tell us about non-transient events. May 21st को in fact Indian American astronomer Srinivas Kulkarni that was awarded the Shaw Prize for Astronomy in 2024 for his work on physics of astronomical transient. Or one of the most well-known such transient is we can see is supernova. When the outer layers of large stars blow up while their cores implode because the stars have run out of elements to fuse. Another famous transient is the active galactic nucleus. ये होता क्या है? Active galactic nucleus. So the center of massive galaxies have host supermassive black holes. Sometimes these black holes actively feast on matter in their orbit. So the interaction होती है between the black holes and the matter in the process cause that later to acquire energy and glow with a changing brightness. 2007 में astronomers discovered a mysterious new transient that called a fast radio burst, which is known to be FRB. So जो supernova हुआ था around 1987 क्या था? Supernova are one of the most well-known astronomical transient. 100 of FRB. FRB क्या होता है my friend? Fast radio burst. That they can emit more than 10 times as much energy as the sun in the few milliseconds. Right. Next one article. Here we talk about India records trade deficit with 9 of top 10 trading partners in 2023-2024. So India has recorded a trade deficit, the difference between imports and export, with 9 of its 10 trading partners is including China, Russia, Singapore and Korea and 2023-2024 according to official data. So China has emerged as India's largest trading partner with कितने billion का? So $118.4 billion. So of its two-way commerce 2023-2024 edging past the US. So the bilateral trade है between India and US stood at $118.28 billion in 2023-2024. And जो Washington have that was the top trading partner of New Delhi during 2021-2022. So India has a free trade agreement with 4 of its top trading partners. पहला सिंगापुर है, UAE है, कोरिया है, इंडोनेशिया as a part of एशियन ब्लॉक. ये जो एशियन ब्लॉक है इसके साथ हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है. किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ, UAE के साथ, कोरिया के साथ, right, as a part of Asian blocks. India has a trade surplus of around $3.674 billion. USA is one of the few countries with which India has a trade surplus. The surplus is also there UK, Belgium, Italy, France and Bangladesh.
जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का लास्ट फिस्कल रो में देखें तो डॉलर 238.3 बिलियन आज अगेंस्ट डॉलर 264.9 बिलियन इन द प्रीवियस फिस्कल. सो अगर आप कंट्री देखें ट्रेड बैलेंस इन बिलियन में चाइना है, फिर रशिया, फिर देन ईरान, 3 कंट्रीज. सबसे लास्ट में यहाँ पे आप देखो यूएसए. So rising trade deficit that can cause the country currency to depreciate because more foreign currency is needed for imports. जब भी कभी ट्रेड डेफिसिट होती है तो ऑब्वियस आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना होता है जो कंट्री की फॉरेन करेंसी होती है इंपोर्ट्स के लिए, एंड दिस डेप्रिसिएशन मेक्स इंपोर्ट्स मोर एक्सपेंसिव. आप समझ रहे हो. तो राइजिंग ट्रेड डेफिसिट होती है दैट कैन कॉज द कंट्री करेंसी दैट टू डेप्रिशिएट बिकॉज मोर फॉरेन करेंसी इज नीडेड फॉर इंपोर्ट्स, and this depreciation makes imports more expensive, worsening the deficit. Economic think tank Global Trade Research Initiative founder जो कि यहाँ पे अजय श्रीवास्तव जी ने बताया. नेक्स्ट वन, ये आर्टिकल जो है बेसिकली टॉकिंग अबाउट न्यू टैक्स पैकेज फॉर अल्ट्रा वेल्दी रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज फॉर पुअर लोअर एंड मिडिल क्लास रिपोर्ट. Tax package for the ultra wealthy in India, including an annual wealth tax and inheritance tax for those who with net wealth exceeding 10 करोड़ से ज़्यादा की है. तो यहाँ पे वेल्थ टैक्स जो है, इनहेरिटेंस टैक्स है, जो बेस लाइन है, जो मॉडरेट है, ये टैक्स बेसिकली उनके ऊपर मेंशन की हुई है. जो पहले था हमारा अर्लियर जो रिलीज हुई थी मार्च में, इंडिया टॉप 1% इनकम एंड वेल्थ शेयर्स दैट हैव रीच्ड हिस्टोरिकल हाइज एंड अमंग द वेरी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज दैट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड. Now the time for we can see is permanent members of UNSC. तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ये सारे परमानेंट मेंबर्स हैं, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड. तो ये क्विक टिप्स है जिसमें आप लर्न करते हैं बहुत सारे टेक्निक्स को. सेकंड है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन जिसमें है फेसर्स विच मीन्स फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश. दिल्ली सल्तनत के किंग को लर्न करने के लिए सब खाओ टमाटर, सब लो मज़े विच मीन स्लीव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी एंड मुगल्स. आप इसको लर्न कर सकते हैं. नाउ हाउ टू मेक नोट्स, ये आपके कुछ सैम्पल्स हैं, खुद के बनाए मेरे नोट्स हैं. सो आप देख सकते हैं कि जैसे इंडियन पॉलिटी है उसमें हाउ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मैंने माइंड मैप के थ्रू रिलेटेड टू इमरजेंसी आर्टिकल 52, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 56, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 368 अबाउट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, Article 15 talking about discrimination, 17 untouchability, Article 19 freedom of speech and expression, Article 124 about the Supreme Court of India, Article 214 about the High Court, 51A talking about fundamental duties, Article 343-51 about the Hindi language, and Article 24 is talking about children below 14 years that cannot work. And here is questions of the day. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, जीपीटी के बारे में है, एआई टूल्स के बारे में है. कंसिडर द फॉलोइंग फ्रेज. गर्भनी मतलब आप समझ गए वो GA2 दैट डिटरमिन्स द जेस्टेशनल एज ऑफ फीटस. हनुमान इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन 11 इंडियन लैंग्वेज. भाषिनी इज ट्रांसलेट टू कॉन्टेंट टू नेटिव लैंग्वेज. तो कितने पेयर सही हैं? बेसिकली सारे सही हैं इसमें. तो भारत जीपीटी जो ग्रुप है इंडिया का अपना है, जैसे चार्ट जीपीटी है. जीपीटी का मतलब क्या होता है माय फ्रेंड? which is generative pre-trained transformer. So भारत GTP ग्रुप ने अनवील किया हनुमान, a series of large language models. जितने भी GPT ग्रुप्स होते हैं वो LLM मॉडल्स पे ही काम करते हैं, large language models पे that capable of responding in 11 Indian language में, which with plans to expand over 20 languages. और रिसर्चर्स ने अभी डेवलप किया गर्भनी GA2 इंडियन स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है दैट टू एक्यूरेटली डिटरमिन द जेस्टेशनल एज ऑफ फीटस ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी. और यहाँ पे डिजिटल इंडिया भाषिनी को मोदी जी ने रिवील किया गुजरात में 2022 में. एंड दिस इनिशिएटिव इज एनहांस इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी एंड डिजिटल सर्विस इन इंडियन लैंग्वेज. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. Who released the corruption perception index?
सो ये क्वेश्चन देखो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? दैट इज नॉट टू बी अ ऑक्सफाम इंटरनेशनल, नो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये जो आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दैट रिलीज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आप देखो इंडिया की जो रैंक थी 180 कंट्रीज़ में ऑफ 2023। एंड द CPI जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इवैल्यूएट्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर perceived level of public sector corruption using a scale from 0, which means highly corrupt, and 100, which means very clean. Next question. In the context of modern India, Jugantar and Bharat Mata associated with reformist Hindu organization, publication against colonialism and revolutionary group. The right answer क्या है? C is the right answer. So in the first half of 20th century, first half of 20th century में revolutionary groups sprang up mainly in Bengal, महाराष्ट्र, पंजाब और मद्रास में थे। So यहाँ पे अनुशीलन समिति भी थी और जुगांतर को इस्टेब्लिश किया गया। महाराष्ट्र में सावरकर ब्रदर्स had set up अभिनव भारत। In the Madras presidency, भारतमाला एसोसिएशन started by नीलकांता ब्रह्मचारी। इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे भगत सिंह जी ने बनाई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में होते हैं, वी शुड नो। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमारा किस में है? 10th शेड्यूल में। सो ऑब्वियस 10th शेड्यूल इज टॉकिंग अबाउट इज पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। 10th schedule of constitution, which embodies the anti-defection law, is designed to prevent the evil of mischief or political defection motivated by the lure of office or material benefit or other similar consideration. So since the anti-defection provision clearly mentioned the existence of political parties and members being disqualified or leaving its membership, the 10th schedule recognizes the system of political parties. And here where is the last question, और ये क्या है? The period between 1885 and 1905 is also known as the era of moderates, or freedom of speech and expression, freedom to form association, reduction of land revenue and protection of peasants from unjust landlords, separation of the judiciary from the executive, abolition of salt tax and sugar duty. तो ये सारे स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट हैं। All the 4 statements here is correct. And the main demands of moderate extremists और moderates में डिवाइड हो गई थी कांग्रेस। सो एक्सपांशन जो ऑफ रिफॉर्म्स जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड शुगर ड्यूटी, रिडक्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन आर्मी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding this, please let us know on the comment section, and please share this session to your friends and family. They must aware what is happening around us. Thank you so much for joining with us. We'll meet you the next YouTube session. Till then, bye bye and take care.